हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके अंदर पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव लॉजिक। आपको पता होगा देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिफिक फैक्ट व्हिच बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, सिंस साइंस और मैथ नीड सर्टेनिटी नॉट assumption. So for a scientific rule or mathematical formula we have to prove it, especially the mathematical formula based on general observation or statement about natural number can be proved by inductive logic. Inductive logic is a method of mathematical reasoning in which general observation or a statement about natural number is proved to be true for all natural number by establishing a base case and an inductive step. तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन which is generally called as first principle of mathematical induction. If we have a statement P of m involving the natural number 10, then using these steps we can prove this statement. In first step, which is called basis step, verify that P of 1 or generally P of m is true. Second step is induction hypothesis. Assume that P of k is true for some arbitrary natural number k. In third step, which is called induction step, using that assumption of P of k, prove that P of k plus 1 is true. If all the above steps are satisfied, then P of n is true for all natural number n. Example से समझते हैं. Example number 1. Prove by mathematical induction that 1 plus 2 plus 3 plus up to n equal to n into n plus 1 divided by 2 for all n belongs to m. Let Pn denotes the above statement. तो इस स्टेटमेंट को थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे. तो हमें पता है जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं कि फॉर n इक्वल टू 1 और एनी स्टेप ये ट्रू होता है कि नहीं. और सेकेंड स्टेप में हम आर्बिट्रली n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू एज्यूम करते हैं. और थर्ड स्टेप में प्रूव करते हैं कि फॉर दिस एजम्पशन k प्लस 1 इज ट्रू. देन स्टेप 1 व्हिच इज बेसिस स्टेप, फॉर n इक्वल टू 1 the sum of series will be 1 equal to n into, since n is 1, equal to 1 into 1 plus 1 divided by 2, which is equal to 1. So here P of 1 is true. In second step, induction hypothesis, let assume for n equal to k, the P of k is true. That means 1 plus 2 plus 3 plus of 2 plus k equal to k into k plus 1 divided by 2. And in step 3, we have to prove that P of k plus 1 is true. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus of 2 plus k plus 1. So by step 2, 1 से k तक का जो सम होगा ये हो जाएगा k whole into k plus 1 divided by 2 plus k plus 1. तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2. इसे अच्छे से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का. So here P of k plus 1 is true. So by principle of mathematical induction, the statement is true. Next, example number 2. Prove by mathematical induction that 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus up to n into n factorial equal to n plus 1 factorial minus 1 for all n greater than equal to 1. Similarly, इसे भी हम by principle of mathematical induction prove करेंगे. That Pn denotes the above statement. So in step 1, for n equal to 1 into 1 factorial equal to 1, and by right hand side n plus 1 factorial minus 1 equal to 2 factorial minus 1. 2 factorial is 2 minus 1 is 1, which is equal to 1. तो here P of 1 is 2. यहाँ पर फैक्टोरियल जो होता है आपको पता होगा n फैक्टोरियल जो होता है 1 into 2 into 3 of 2 n, ये इसका फॉर्मूला होता है. Next in step 2,
assume that for n equal to k is true. That means 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus of 2 k into k factorial equal to k plus 1 factorial minus 1. Then in step 3, we have to prove that k plus 1 is true. 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus of 2 k into k factorial plus k plus 1 into k plus 1 factorial इक्वल टू, देखो यहाँ से 1 into 1 factorial से k into k factorial तक का जो सम होगा बाय स्टेप 2 ये होगा k plus 1 factorial minus 1 plus remaining term is k plus 1 into k plus 1 factorial. तो इसे अगर हम अच्छे से अरेंज करके लिख ले तो ये हो जाएगा k plus 1 into k plus 1 factorial plus k plus 1 factorial minus 1. तो इस दो टर्म में से अगर हम k plus 1 factorial को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा k plus 1 factorial into k plus 1 plus 1 minus 1 which is equal to k plus 1 factorial into k plus 2 minus 1. यहाँ पर k plus 1 factorial into k plus 2 जो होगा ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ k plus 2 factorial minus 1. तो फॉर n इक्वल टू k plus 1 तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा k plus 1 factorial minus 1. So by principle of mathematical induction this statement is true. Next example number 3, let n greater than equal to 1 and let a b1 b2 up to bn be a set. Prove that a union intersection from I equal to 1 to n bi equal to intersection from I equal to 1 to n a union bi using the mathematical induction. तो इसे भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे. लेट पी एन डिनोट्स द अबव स्टेटमेंट. अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दो. इंटरसेक्शन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू n बी आई होता है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं b1 इंटरसेक्शन b2 इंटरसेक्शन b3 ऑफ 2 इंटरसेक्शन bn. So by principle of mathematical induction for n equal to 1 a union intersection from I equal to 1 to 1 pi equal to, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन फ्रॉम I 1 से 1 है तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट होगा b1 तो ये हो जाएगा. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a यूनियन b1. सिंस इट्स ए वन सेट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन फ्रॉम I इक्वल टू 1 to 1 a union bi. So here p of 1 is true. In step 2, assume that for n equal to k, p of k is true. That means a union intersection from I equal to 1 to k bi equal to intersection from I equal to 1 to k a union bi. So next in step 3, we have to prove p of k plus 1 is true. A union intersection from I equal to 1 to k plus 1 bi. हो जाएगा ए यूनियन, ये जो इंटरसेक्शन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू के प्लस 1 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू के बी आई इंटरसेक्शन बी के प्लस 1. तो ये हो जाएगा ए यूनियन इंटरसेक्शन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू के बी आई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के प्लस 1. Since A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. ये वाला जो टर्म होगा तो बाय स्टेप 2 ये हो जाएगा इंटरसेक्शन फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू K A union B इंटरसेक्शन A union B K प्लस 1. तो इसे अगर हम एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू K प्लस 1 A union B. So here P of n is true by principle of mathematical induction. Next जो है सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन. तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल में P of 1 को ट्रू प्रूव करते थे, देन P of k को ट्रू एज्यूम करते थे, देन यूजिंग दिस हाइपोथेसिस P of k plus 1 को ट्रू प्रूव करते थे.
लेकिन सेकंड प्रिंसिपल या स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में पहले पी ऑफ एम को टेस्ट करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं, देन पी ऑफ एम प्लस वन एंड पी ऑफ एम प्लस टू ऐसे ही चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं, देन अज्यूम करेंगे पी ऑफ के माइनस वन ट्रू है। यूजिंग दिस हम प्रूव करेंगे कि पी ऑफ के इज ट्रू बट के ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस वन। एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रूव दैट एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू can be written as product of prime numbers, which is generally known as Fundamental Theorem of Arithmetic. Let P of n denotes the above statement. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं m equal to 2 for m equal to 2 is itself prime, so it can be written as product of prime number. Next, here m plus 1 equal to 3, then 3 itself a prime number, so it can be written as product of prime number. Similarly, m plus 2 equal to 4, which can be written as 2 into 2. Since 2 is prime, so m plus 2 can be written as product of prime number. So here, p of m plus 1 and p of m plus 2 is true. So assume p of k minus 1 is true. That means k minus 1 can be written as product of prime numbers. Then we have to prove P of k is true for n equal to k. There are two cases. For case 1, if k is prime, so it itself a prime number. That's why it can be written as product of prime numbers. And in case 2, if k is composite number, we can write it as product of two numbers, a into p. And here a and p are greater than equal to 2 and less than k. That implies a and b are greater than equal to 2 and less than equal to k minus 1. And by step 1 and 2, p of m plus 1 of 2, p of k minus 1 are true. Since a and b are in between p of m to p of k minus 1, that means a and b can also written as product of prime numbers. That means k also written as product of prime numbers. So by strong induction, this statement is true. I hope मैथमेटिकल इंडक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।